they came into jeopardy and nothing could happen. So there was a wave of frustration among the people as well as the producers and consumers. So there was the rise of a new economist now. His name was John Maynard Keynes. You might have heard the name. So John Maynard Keynes जैसे नए इकोनॉमिस्ट का राइज हुआ, John Maynard Keynes ने इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया कि नो, मार्केट इज नॉट मैनेजिंग इटसेल्फ, रेदर इट नीड्स द एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट टू रन द इकोनॉमी. उसने कहा कि देखो इकोनॉमी को एक्टिव स्टेट को एक्टिवली रन करना चाहिए और स्टेट को इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए स्टेट को वर्क करना चाहिए. कैसे? So he has given a theory that is called the demand management. According to him, the state had to do the demand management. How demand management? So he believes that if there is a declining demand in the market, then the state had to increase the expenditure and make a curtailment in the tax. मतलब कि जब मार्केट में जब डिमांड कम लगे तो स्टेट को अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, मतलब अपना जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना चाहिए. अभी देखो जो बजट आई है उसमें आप देखोगे कि जो अभी रिसेंट में जो बजट आई थी उसमें कैपेक्स का 10 लाख करोड़ कैपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, क्यों तो डिमांड उसे राइज करेगा. उसका फायदा मिला कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनी लेकर आया और अभी इकोनॉमी देखो उठ रही है. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ टैक्स नहीं काटा. बात दूसरी है, उसने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को टैक्स का रेट कट कर देना चाहिए, तो लोगों में परचेजिंग पावर आएगा तो लोग परचेज करेंगे, तो डिमांड रिक्रिएट होगा. और उसका कहना था कि डिमांड रिक्रिएट होगा तो इससे डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा एंड कॉस्ट से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड देन वंस प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. So the growing demand will, you can say, increase the cost of the product, and the increase in the cost will give a support to production, and more production means more employment, and more employment means more demand. So cycle will run. A time will come कि there will be 100% demand and the market will be heated. मतलब अब there is inflationary pressure on the market. अब कहने का मतलब है कि जब सबको employment मिल जाएगा और जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आने लगेगा, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कट करे और अपने टैक्स को बढ़ा दे. The government had to make a curtailment in expenditure and increase the tax. So that is Keynesian economics. And this economics run up to 1970s. But in 1970s there are the two oil crises. The first oil crisis 1973 and the second oil crisis 1979. I'll make you clear. और ऑयल क्राइसिस के बाद क्या हुआ कि पूरे केनेसियन इकोनॉमिक जो है वो कोलैप्स कर गया. So there was the rise of, it was the time the British Prime Minister Margaret Thatcher and American President Ronald Reagan both came together and both introduced a new system that is called Washington Consensus that was supported by the two new economists, not new economists were old but theory were applied, Friedrich Hayek and Milton Friedman. So they became the father of the new liberal economy. Today आप कहते हो कि हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. So what is economic liberalization? यही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है जो तुम देख रहे हो कि फिर एक बार इकोनॉमी जो कंट्रोल इकोनॉमी थी उसको फ्री कर दिया गया, और जो कंट्रोल इकोनॉमी फ्री कर दिया गया फिर एक बार एडम स्मिथ पर तो हम लोग नहीं लौट पाए, लेकिन फिर मार्केट फोर्सेस को हमने बहाल किया कि मार्केट में कम से कम इंटरवेन करो, गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल को वापस ले, गवर्नमेंट का कंट्रोल को डिसमेंटल करो. तो गवर्नमेंट के कंट्रोल को डिसमेंटल करे, यही तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है. इसी को न्यू लिबरल, ओल्ड लिबरल था एडम स्मिथ का, ये हुआ न्यू लिबरल. So my friends, in this way your economy is moving from 16th 17th century to till today. So this is history. History is the mother of all subjects. How the world is undergoing a phase of change, and same happens in case of constitutionalism. Today you have gone through polity and constitution, possibly in future, not at this stage, but you will go through polity and constitution. But make me clear, in polity and constitution you have to make a study of Indian constitution. But what is the genesis here? In order to understand the Indian constitution, you are supposed to go in the world history first and try to understand the British constitution. So how did British constitution evolve? So world history will give you the information. Then American constitution. After American revolution, you can say there was the framing of American constitution. अब you people, मैं आपको बताता हूँ. जैसे today, अब today you can say the British federal system or federal model you might have heard about. तो British federal model में एक बात तुम याद करो. Sorry, not British, American federal model. British unitary system है. तो British का unitary system है. British का parliamentary model है. American का presidential model है. British का डिवीजन ऑफ पावर है, अमेरिकन का सेपरेशन ऑफ पावर है. तो अमेरिकन में फेडरल मॉडल है. दुनिया में पहला फेडरेशन अमेरिका में बना. व्हाट इज द अमेरिकन एक्सपीरियंस? अब आई हैव टोल्ड यू कि 13 स्टेट्स व्हाट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो अर्लियर यू कैन से दीस वर द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज. सो द fought against the British colonies, and after you can say through the combined effort they got independence. So after getting independence they were the 13 independent nations earlier. So they were just likely to be independent from Britain. So there was a question, what will happen to them and what would be their future direction? So some smaller states, after bidding farewell and after you can say bidding goodbye to other partners, they were just opting out and they were moving on their own path. But some bigger states requested them, no, please stay, and we states and we combined together should have developed some arrangement and we have to live together. But the smaller states were apprehensive of the fact that the bigger states could try to overpower them, try to dominate them. So there was a major problem of consensus between the two. Finally, you can say there was the convening of Philadelphia Congress in 1787, and for 2 years this Congress worked for making an American constitution, and finally this constitution came into existence in 1789 through compromises and counter compromises. तो ये फेडरल सिस्टम जो था, उस फेडरल सिस्टम में तुम देखोगे ये स्टेट्स का हैंड अपर है, क्योंकि आपको अगर यूनियन बनाना है तो आपको स्टेट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. नहीं तो स्टेट्स बोल रहा था कि हम जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, लेट अस मूव, क्योंकि आप हमें दबाओगे, आप हमें डोमिनेट करोगे, तो आपको उनको एश्योर करना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप हम लोग साथ साथ रहेंगे. फाइनली क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा फेडरेशन बनाया जिसमें स्टेट्स का ग्रेटर से था और इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है. एवरी स्टेट हैज टू गिव रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट विद 2 members each, in spite of the fact that irrespective of their size, whether they are the larger state or the smaller state, but all of them and each of them were supposed to give only the 2 representatives in the United States of you can say in the Senate, that was the upper chamber of USA. तो मतलब उनको चाहे उनका साइज बड़ा हो छोटा हो, but every of them were supposed to send their 2 representatives. तो ये जो फेडरल सिस्टम जो वर्ल्ड में आया था हमारे, तो आज तुम फेडरल सिस्टम वर्ल्ड का कर रहे हो. उस समय मैंने आपको बताया था कि आखिर क्या कहा बाकी देशों ने, यूरोपियन कंट्री तो हंस रहे थे, दे वर लाफिंग एट अमेरिकन एक्सपीरियंस. मतलब they came to view it was not the proper marriage, rather it was a living together, some arrangement of living together. मतलब कहना था कि शादी तो हुई नहीं, इनके बीच लिविंग टुगेदर से अपना काम चला रहे हैं. ये जो परसेप्शन उनका है माय फ्रेंड्स, इट वाज लेटर
द डिफरेंट कंट्रीज डिड द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेडरेशन. अब इंडिया का फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन की तरह कैसे होगा तुम बताओ. इसका एक्सपीरियंस अलग है, स्विट्जरलैंड का एक्सपीरियंस अलग है, कनाडा का एक्सपीरियंस अलग है. तो माय स्टूडेंट्स, अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन इन 19th century this constitutionalism prevailed in the different parts of Europe, you know. And one important thing I have told you whenever I have taught you the modern history, the Indian experience. After Second World War, India was the first country to get freedom, you know, and then India experimented with the democracy, you know. I have told you that India democratized the idea of democracy. People are familiar with. So we Indians have directly introduced the universal adult suffrage, but it was not the case in Western Europe. Sorry, it was not the case in the Western world. Whether it might be USA, whether it might be France or any other countries. Basically, they started their government based on the limited franchise. मतलब जो अमेरिकन संविधान बना या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सबको वोटिंग राइट नहीं था. दे इंट्रोड्यूस द लिमिटेड वोटिंग राइट, लिमिटेड फ्रेंचाइज. तो ऐसा इसलिए था कि उनका कहना था कि सिर्फ मिडिल क्लास, उसमें इंपावरमेंट ऑफ मिडिल क्लास हुआ. मिडिल क्लास ने अपने पावर को गेन किया. उसने अरिस्टोक्रेटिक क्लास से, उसने चर्च से लड़के पावर को छीना और पावर को अपने तक रखा. उसका कहना था कि पावर लोअर क्लास तक नहीं जाना चाहिए. मतलब इनलाइटनमेंट, मैं आपको बताऊंगा उसका स्लोगन क्या था. वो एक मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू था. उसका कहना था कि गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल. मैंने सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए, परंतु जनता के द्वारा नहीं. तो इसलिए आप देखते हो कि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कब एडॉप्ट किया पता है. एक तो दुनिया में सोशलिज्म आया, रशियन रेवोल्यूशन हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो एक तरह से वर्कर्स में कॉन्शसनेस ज्यादा है, क्योंकि वॉर एफर्ट्स में वर्कर्स ने ज्यादा साथ दिया था. वुमेन में भी ज्यादा कॉन्शसनेस आया. और जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो रशिया ने वर्कर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जो कार्ल मार्क्स ने बोला था. तो अब वेस्टर्न कंट्रीज को लग रहा था, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज को, कहीं ऐसा न हो कि रशियन कम्युनिज्म एवरीवेयर प्रिवेल कर जाए. इस डर से उन्होंने सबको वोटिंग राइट दे दिया. तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच उसमें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है. यूएसए में 1920 में आया है, ब्रिटेन में 1928 में आया है, फ्रांस में 1944 में आया है. तो हमने तो वर्ल्ड हिस्ट्री में डेमोक्रेसी को बनते देखा है. हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी को आज तक उभरते देखा है. हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को इवॉल्व करते देखा है, राइट फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया टिल यू कैन से द प्रेजेंट यूएनओ. तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री इस रूप में गेटवे ऑफ नॉलेज है. अब आप ही बताइए कि आपके पास टॉपिक इतने हैं और मेरी इसमें महत्वाकांक्षा यह है कि जैसे देखो, अब हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री द स्टडी ऑफ चेंज. स्टडी ऑफ चेंज इज दैट. तो अब आपका सिलेबस तो चलो, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट से हम एक्सक्लूसिवली देखें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, नेम यहां तक जाके, या कोल्ड वॉर और नेम तक जाके फिनिश हो जाए. लेकिन इसमें मेरा यह मानना है कि जब 1980s 1990s तक तुम आ रहे हो, तो रशियन डिसइंटीग्रेशन वगैरह 1990s तक हो, 2000 तक हो. और मैं चाहूंगा कि देखो, यूपीएससी का स्लोगन होता है समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग. अगर हम लिमिटेड पढ़ेंगे तो हमको याद करना पड़ेगा, और अगर हम कनेक्टिविटी अगर बड़े एरिया से जोड़कर देखेंगे तो देन वी कैन बी अ थिंकिंग क्रिएचर एंड वी कैन जस्ट ट्राई टू एसिमुलेट द थिंग्स वेरी ऑर्गेनिकली. वी हैव नॉट टू डू द रूट लर्निंग. मतलब आपको पता चला कि देखो इससे चेंज कैसे होता है. और हिस्ट्री तो पर्टिकुलरली है जैसे कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड है. अब यू आर जस्ट मूविंग बैकवर्ड टू व्हाट हैपेंड टुडे. सो यू आर मूविंग फ्रॉम the root of the today's is pandemic and what happened one decade earlier. Then you are moving further. What is the root of the history of 2010, 2015 and 2016, or before pandemic? So that will move into the American subprime loan crisis and Eurozone crisis in 2008-9. If you will just try to find out the cause of the Eurozone crisis and American subprime loan crisis, so its root is in economic liberalization and globalization of 1990s. And if you have to find out the root of economic liberalization and globalization, then you will just try to find its antecedent in, end of the disintegration of Soviet Russia and end of the Cold War and the success of capitalism, and oil crisis and the failure of Keynesian economics. If you will just observe here the root cause of the economic, you can say the oil crisis and the end of the Cold War. So the root will just move to the Cold War, and then you will try to find out the root of the Cold War. Then you will just move into the Second World War, and the root of the Second World War, then the First World War, and you will find the root of the First World War. You will move to Industrial Revolution and French Revolution, and you will just try to find out the cause of Industrial Revolution and French Revolution. Then you will move to Enlightenment of 18th century, and then you try to find out the root of Enlightenment of 18th century. You have to move to Commercial Revolution of 17th century, Renaissance, Reformation, and the rise of capitalism. And you will try to find out their root. Then you will move to medieval Europe. The medieval structure of Europe is the core. And if you have to find out the root of the medieval institutions in Europe, you will move toward the ancient Europe. So whenever you have to move in the backward direction, you will start from the contemporary world, and you will move to that situation when the man was during the Stone Age. It was breaking the stone implements. So you will start from this contemporary AI age to the previous Stone Age. So that is history, the total connectivity in every field. So my students, I've just come to the point. So here my point is, after the Cold War and this name, we have to be slightly we have to give focus, but horizontally मेरी इच्छा है कि हम थोड़ा आपको एंशिएंट वर्ल्ड बता दें, थोड़ा मेडिवल वर्ल्ड बता दें, एंड फिर राइज ऑफ मॉडर्न रेनेसां, कमर्शियल रेवोल्यूशन के बारे में बताते हुए फिर तब हम इनलाइटनमेंट और ऑनवर्ड्स बढ़ते चलिए, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक करते हुए, और सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, नेम पर आए, और तब प्रिसाइजली तुम्हें उसके बाद 1990 2010 एंड जस्ट यू कैन से जस्ट अप टू द पैंडेमिक. तो मैं वहां तक थोड़ी सी झलक दे दूं, ये मेरा एंबिशन है. और इसी क्रम में आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इन सब की एक नॉलेज, एक समथिंग ऑफ एवरीथिंग दे दे, ताकि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसका यूज हो जाए. दैट इज माय एंबिशन. अब तुम लोग सजेस्ट करो क्या करूं. मैं प्रिसाइज हो जाऊंगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा थोड़ा नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएगा, एंड पर्टिकुलरली 1.5 आवर का क्लास लेना है. तो आप बताइए व्हाट यू पीपल विल चूज, आई हैव टू इंप्लीमेंट. तो मैं स्टूडेंट्स, आज तो मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूं, तुम बिगिनर हो, एंड लेकिन आज जो मैं ले रहा हूं तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन लेके मैं आपको एक प्लानिंग बता रहा हूं कि मुझे क्या करना है.
देखो दो तरह की पढ़ाई होती है। एक तरह की पढ़ाई में लोग रूट लर्निंग करते हैं, दूसरी तरह की पढ़ाई में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। फिर आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है, फिर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है। तो आप अगर उस तरीके से पढ़ोगे कि टॉपिक टू टॉपिक आप मूव करोगे, तब तो आपको और भी डिफिकल्ट पड़ जाएगा बिगनर को, क्योंकि बिगनर तो फिर तुम आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे तुम भूलोगे। तो उसमें क्या है, तुम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में तुम बताओ, जो मेरा मेथड है तुमको ज्यादा, जैसे इससे पहले तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, जब मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री तुमने पढ़ा तो ज्यादा तुमको कंफर्टेबल लगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके बाद उस पर सोचने लगे, यू स्टार्टेड टू थिंक ओवर द टॉपिक। अर्लियर व्हाट वर डूइंग, यू आर डूइंग द रूट लर्निंग। तो रूट लर्निंग के बाद तुम क्या करते हो कि उसको फॉरगेट कर जाते हो, जल्दी भूल जाते हो। तो मुझे लगता है कि अब अगर पढ़ोगे तो मैं सीधे तुमको इनलाइटनमेंट यहाँ से सिलेबस शुरू होता है, कम से कम रेनेसां वगैरह से शुरू करूं, और पढ़ोगे तो थोड़ा सा एंशिएंट वर्ल्ड, फिर मेडिवल वर्ल्ड, तो मुझे लगता है उससे तुम्हारा और भी खुलेगा। तुम बिगिनर हो तो बिगिनिंग से शुरू करो ना। My point is, you will start from the beginning. You are a beginner. Suppose I start to make Renaissance. So I'll give a reference sometime to medieval Europe, like feudalism. So you will ask me what is feudalism? Sir, make me clear. I am a beginner. I don't understand. Please help me. तो वहाँ पे मैं फिर में पड़ जाऊंगा। तो क्यों ना मैं तुमको थोड़ा एंशिएंट वर्ल्ड से कहानी की तरह बता दूं, फिर मेडिवल वर्ल्ड को प्रिसाइजली कहानी की तरह बता दूं, और तब मैं फिर आपको रेनेसां, रिफॉर्मेशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बताती हूं, और प्रिसाइजली मैं स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूं एडवांस में। सो आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, यू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल। यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर आना है तो तुमको थोड़ा तो कष्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट सिंपली द बेड ऑफ रोजेज, दिस इज ए चैलेंज, यू नो। तो थोड़ा हम तो तुम्हारे लिए इतना एक्टिव है, एग्रेसिवली तुम्हारे साथ काम करने के तैयार है, तो थोड़ा तुम भी तो पेन बियर करोगे। ये तो म्यूचुअल होगा, तभी तो सीख पाओगे। तुम यूपीएससी स्टैंडर्ड पहुंच नहीं पाओगे। यूपीएससी स्टैंडर्ड में सोचो, तुमको जनरल स्टडीज के पार्ट करने हैं, एसी करने हैं, यू हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू। हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट द प्रॉपर प्रिपरेशन? तो मुझे कोई अच्छा थोड़ा लगता है, मुझे तो खुद प्रेशर पड़ता है। मुझे कहो तो मैं 10 दिन में तुमको फिनिश करके भेज दूं। बोलो क्या बोलते हो? इट इज अप टू यू, व्हाट यू पीपल विल डिसाइड, आई हैव टू टेक द डिसीजन। प्लीज ऑल ऑफ यू हैव टू गिव मी some basic idea कि what you people want, then I have to follow your own method. डिटेल एंड बिगिनिंग, दैट विल हेल्प यू। लाइफ में एक बार मेहनत कर लो, डेज की चिंता मत करो, बिकॉज यू नो कि मेरे लिए तो और भी बर्डनसम होता है, आपको पता है। बट माय स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज डूइंग व्हाट इज in your larger interest. I am not going to follow the beaten path. And what you know that is the beaten path. Everybody can say they are delivering you informations, but informations will not work. Even for the beginner, this is the best method which I just imparted you. So my friends, tomorrow and today, you can, it is simply for what should be the proper strategy for study of world history. To study history means to underline the elements of change in political, economic, social and cultural fields. Simultaneously, the intrinsic relations among different fields, political, economic, etc. also need to be underlined. Following diagram denotes. देखो, actually, my student, observe this diagram. Here I have to make you clear. If whenever you have to make a study of the world history, the same formula is applicable. If we are supposed to underline the elements of change in political field, in economic field, in social field, and cultural field. Now, my students, this is the economic change. So this is supposed to be the basis of all the change. Because whenever there is the economic change, it prepares the basis for a social change in this direction. And the social change, ideological change. And once again, ideological change, political change. And then the cycle is going on. जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे जब इकोनॉमिक चेंज होता है तो उसका मतलब होता है सोशल चेंज। क्यों होता है कि पहले से जो एक क्लास एस्टेब्लिश्ड है उसकी मोनोपोली टूटती है, उसकी मोनोपोली टूटती है और एक नया क्लास एस्टेब्लिश करता है। तो जिसको तुम आइडियोलॉजी कहते हो, आइडियोलॉजी क्या होती है? तो आसमान से नहीं गिरता है। आइडियोलॉजी इज नॉट फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, नाइदर वाज इट कमिंग फोर्थ फ्रॉम द अर्थ। आइडियोलॉजी वाज हैविंग इट्स रूट इन अ सोशल क्लास। अब जैसे देखो, अगर टुडे अगर तुमको एलजीबीटी कम्युनिटीज की राइट है, तुम तो इसी सोसाइटी में रहते हो। ये जो राइट है, ये राइट आज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि एक क्लास ऑफ पीपल ऐसे आ गए हैं जो राइट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक नई आइडियोलॉजी आई कि नो नो, द फ्रीडम शुड बी एक्सटेंडेड इवन टू दोज हु आर ऑन द मार्जिन ऑफ सोसाइटी, दैट इज द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, इवन दैट शुड एंजॉय द सेम राइट। ऐसे हमारी जो विचार चेंज होता है, वो विचार इसलिए चेंज होता है कि एक नया क्लास आता है, उसके इंटरेस्ट से वो विचार मिलता है, इसलिए विचार चेंज होता है। तो जब इकोनॉमिक चेंज होता है तो एक सोशल क्लास का जो मोनोपोली है वो टूटता है। उसका मोनोपोली टूटता है तो उसकी मोनोपोली में जो टूटन होती है, एक दूसरा क्लास आता है तो पहले इसकी आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही थी, उसकी जगह एक नई आइडियोलॉजी प्रिवेल कर जाती है। इसलिए सोशल चेंज होता है तो आइडियोलॉजिकल चेंज होता है। जैसे यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर वाज द राइज ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास और द लैंडेड क्लास, द फ्यूडल क्लास, सो देयर वाज द फ्यूडलिस्टिक आइडियोलॉजी प्रिवेलिंग, inequalitarian ideology. But when there was the rise of a commercial and industrial class, that is the middle class, so there was the rise of a new ideology, liberty, equality, and fraternity. But this liberty, equality, and fraternity was having a parochial meaning, parochial approach. ये जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा तो दिया, परंतु ये ठगने वाला नारा था. It was just a cheating to the lower class. Because liberty, equality, and fraternity को middle class ने खुद अपने ढंग से define किया. Then there was the rise of Karl Marx and aggressive socialism. So there was the rise of the lower class. So once again ideological change. तो ये change इस change को बनाता है, ये change इस change के लिए रूट को तैयार करता है, और यह change इस change के लिए रूट को बनाता है, और फिर ये साइकिल चलता है। फिर political change से economic change, इससे फिर social change, इससे फिर ideological change. ये साइकिल my students मूव करता रहेगा। एंड इन कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वी हैव टू अंडरलाइन द चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक टू सोशल, सोशल टू आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल टू पॉलिटिकल, ऑल चेंजेस आर गोइंग टुगेदर एंड इट वाज इन अ साइक्लिक मैनर। अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि डू दे अंडरस्टैंड दिस साइकिल? मैं स्टूडेंट हिंट कर लिया क्योंकि आप बस एक ही आपके रिस्पांस का साधन है, पहला क्लास है। मैं सोचता हूं कुछ बेसिक चीजें आप समझ लें कि हमें करना क्या है, उसके बाद तो फिर मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक ले चलूंगा तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। डू दे अंडरस्टैंड? जल्दी समझ जाओगे, हैव कॉन्फिडेंस, पहले तुम लोग डरना मत, मैं हूं ना। हाँ बोलो। नो नो, 9th and 10th Ayush, 9th and 10th. In 6th NCERT, ancient history separately. In 7th NCERT, medieval history separately. In 8th NCERT, modern history separately. And it was in 10th NCERT in class 9th and 10th and 11th world history part. But 11th is not much relevant for you people. That is going to be
with vast. So at least you can take the class 9th and 10th, the new NCERT book. That will help you. मैं कल मैं आप लोगों को एक नाम बता के मैं टॉपिक बता दूंगा. आप लोग NCERT पढ़ना चाहेंगे क्या आयुष? आप लोग NCERT पढ़ना चाहोगे? Will you prefer to read NCERT book? Go through the NCERT book. Yes, sir. Book list will be there. Book list. Okay, tomorrow I'll give you the book list. Tomorrow. Sir, we will also cover the ancient part. What I'm No, we're not going to say ancient. I'll start from there. I'll already provided you the study material today. You have to start from there. देखो, देखो ancient Europe. So Persian Empire. I'm going to start. Not Indus Valley and so on. Not Mesopotamian. I'll just start from political Persian Empire. Then I'll make you Greek Empire, ancient Europe, and then Roman Empire. That is the map. Economic condition, social condition, religious condition. Jesus Christ. Suppose you can say you go through world history. Even you people may be a bit curious. Why Jesus Christ was crucified? Why was Jesus Christ crucified? And who was the culprit behind that? Who was the protagonist? Who was the culprit behind the crucifixion of Jesus Christ? And for what fault? And for what you can say mistake? Or for what you can say misdeed? He was crucified. Being destined of history, people should not know it. अंकुर आस्क उनसे पूछिए कि क्या आपको नहीं जानना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट को किसने क्रूसिफाई कर दिया भाई? दुनिया में एंशिएंट रिलीजन क्या था? वहां क्रिश्चियनिटी थी, चाइना में कन्फ्यूशियसिज्म था, ईरान में जोरोस्ट्रियनिज्म था, इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म था. मतलब अब जो दुनिया में इतने सारे रिलीजन है, दुनिया कैसे बदल रही है कि आपको जानना नहीं चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप एक इंटेलेक्चुअल हो, एक इंटेलेक्चुअल को दुनिया में बदलाव को नहीं समझना चाहिए. उनको नहीं समझना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट को किसने क्रूसिफाई किया, विथ व्हाट पर्पस. आस्क माय फ्रेंड्स. Yes, then ancient will be over. Very precise. Feudalism, medieval, you are just moving to. Just 1 minute. Economic structure, universal church system, rise of Islam and crusades. Crusades root, धर्म युद्ध जो इस्लामिक वर्ल्ड एंड ईसाई वर्ल्ड में हुआ था. सोसाइटी ऑफ मिडियल यूरोप, एरिस्टोक्रेटिक क्लर्जी क्लास, कॉमन पीपल, कॉमनर्स, होली रोमन एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, राइज ऑफ मॉडर्न. बस उतना ही तुम्हारा एंशिएंट मेडिवल मैं इतना प्रिसाइजली कवर करूंगा कि मुश्किल से 3 to 4 पेज में तुम पूरे एंशिएंट वर्ल्ड देख रहे हो, वर्ल्ड देख रहे हो. यू हैव टू गो नथिंग फॉर दैट. सिर्फ मेरा स्टडी मटेरियल तुम आप पढ़िए, मैं कल आपको समझाऊंगा. यू विल डू द क्वेरीज, आई विल रिप्लाई द क्वेरीज एंड यू पीपल विल फाइंड कि हम डायरेक्टली आपके दिमाग में प्लांट कर देते हैं. अब घबराइए मत. वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लास में आप लोग कोई मन में यू शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड हिस्ट्री इन द क्लास इटसेल्फ. बस यू पीपल हैव टू बी मेंटली अलर्ट एंड गो थ्रू माय स्टडी मटेरियल. मैं ये नहीं, आप एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड अभी आपको नहीं समझ में आएगा, कल मुझे कवर करने दीजिए, फिर आप इसमें पढ़ लेंगे. क्लियर? हाँ मिस्टर अंकुर. Concept capsules you have to follow it because in ancient actually it has already been given in the complete form. So you have to go through this concept capsule separately. You should not try to mix it with the mains. क्योंकि mains में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना आपको. इसमें एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ तो एनालिसिस भी चाहिए स्लाइटली, बट इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Ramkrishna question, sir, why we don't come to see Indian revolution like French or American revolution? Come to see Indian revolution like French or American? Because the situation of you are going to Ramkrishna. Why are you asking me? I'll ask you people because so far you have not gone to the history of the world. Do you know up to 16, up to 15, up to 17th, 18th century, early 18th century, Asia was the work. Asia was basically the workshop of the world, and India and China together, combined together, used to form the 55% of the total world GDP at that time. And balance of trade was in favor of Asia, in favor of India and China. Even the Bernier has just admitted it. With the gold and silver, while moving around the world, it is finally falling into the mud of India. So at that time, you consider the Marcy land of India. So मतलब ये स्टेटमेंट बर्नियर का था. हमारा इतना जो फ्रेंच वीटर है इंडिया का, तो इतना हम लोग प्रॉस्पेरस कंडीशन में थे. लेकिन डाइवर्जेंस कहां से हुआ, क्यों वेस्ट आगे बढ़ गया, वेस्ट में किस तरह से चेंजेज हुए. मतलब कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट भी इंसान के लाइफ में कुछ पॉजिटिव थिंग ला देता है. वही पॉजिटिव थिंग्स ला दिया है यूरोपियन कंट्रीज के लाइफ में कि यूरोप जो एशिया से इतना पीछे था, वो यूरोप इतना एशिया के पैरेलल में कैसे आ गया, एशिया से आगे कैसे बढ़ गया, और फिर दुनिया को कैसे रूल कर लिया. ये तो मैं रामकृष्ण तुमको बताऊंगा. सो यू हैव टू योरसेल्फ आंसर माय क्वेश्चन एंड माय सेल्फ आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड यू पीपल हैव टू रिप्लाई इट. So my question is that today's world is neoliberal. No, economic state. Soumya, have patience. Soumya, have patience. Neoliberal economy today, whether it is neoliberal or not, in today's world, you can say, particularly after you can say the subprime loan crisis and eurozone crisis. So that was going to affect the policy of economic liberalization to a certain extent.
and particularly after this world pandemic, what is known as COVID-19. So there was a supply disruption in the world, and due to the supply disruption, almost the major countries of the world started to be inward looking now. And if you are inward looking, then in what way you are following the policy of economic liberalization? Even India adopted the policy of Atmanirbhar Bharat. So we have been inward looking. लेकिन समय थोड़ा सा तुम लोग टाइम दो, अभी जब मुझे थोड़ा एक बार वर्क कर लेने दो, फ्यूचर टेंस के लिए तुम हमारे स्टूडेंट हो, मैं तुमको शीशे की तरह हर चीज साफ कर दूंगा, तुम पेशेंस रखो और मुझे फॉलो करो. First, what is Indian Renaissance? Indian Renaissance, Hers, I'm doing a counter question to Hers. Please, Hers, reply me. Have you attended my class of modern history? Have you attended my classes of modern history? Hers, please reply my question. It is essential for me. Mr. Ankur, is there any reply from the side of Harsa? If you might have attended the part of world history, I have taught you socio-realism forms movement of 19th century. So socio-realism forms movement of 19th century is the Indian Renaissance. At the Renaissance of 16th century Europe, so it is the Renaissance of 19th century India. Is necessary for modern history? No. It is better to cover modern history after world history. पहले दुनिया को देखो तब इंडिया को देखो. मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कुछ बातों की चर्चा हमने मॉडर्न हिस्ट्री में की हुई है. So my students, you should not get disheartened from where world history part is. It is better to start from world history. And I have taught you earlier. Many of you have just gone through the modern history first. But if we could have moved from world history to modern history, it would have been better. Because without the Fernand Braudel, you will go through my NCERT book of class 9. So please go through the preface. In the preface part, you will come to know that without the proper knowledge of the world, you cannot understand India. देखो तुम 19th century का तुम NCERT का preface पढ़ो. Please, my students, it's my recommendation for you. Uncle, ask my students, are they having at their home the NCERT book of class 9th and 12th? NCERT book in the history NCERT book class 9th and 12th, 10th, or even 9th or 10th or any of them, are they having at their home? Please, Uncle, ask my students. Yes or no? Yes. Yes. Today, I'm doing the assignment, my student, and always take my assignment seriously. Just visualize me, I'm just before you. Go through NCERT book in preface part. Preface part जो NCERT book का जो preface है, जहाँ पर प्रस्तावना लिखा होता है, उसको क्लास 9th के NCERT को पढ़ो and class 10th के NCERT को पढ़ो. Compulsorily. It's my recommendation for you people. What was the impact of unification ceremony in India? Nothing directly on India, but major impact on Europe. Isha, major impact on Europe. तुम लोग अभी क्वेश्चन पूछना बंद करो यूरोप के बारे में. लेट मी फिनिश इट फर्स्ट. एक कहावत है, आप स्पून से पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी. मैं आपको पूरा का पूरा ग्लास पिलाऊंगा, तब आप समझ में आएगी. So you people have to follow ancient and the medieval world, and apart from that, you people have to go through the NCERT book preface. In preface, you will realize one thing. वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि we are just what is the significance of going through the history and what is the significance of reading history. In the preface, you will find that we are just looking around the world. You can say we are just looking around the world and looking around the institutions, looking at the institutions around us, but we never try to find out the question what is its antecedent. From where the institutions sprang up, from where the institutions, you can say institutions, from where the institutions were formed. We are not going to ask the question. Whenever you try to find out the institutions just around us, you will come to know their root is lying in history. मतलब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि वो कहां से आए, हम कहां से चलकर यहां तक पहुंचे और हम कहां से चलकर आज हमारे इंस्टीट्यूशंस यहां तक एस्टैब्लिश हुए हैं. जब इस क्वेश्चन का जवाब हम पाने की कोशिश करते हैं तो दैट इज हिस्ट्री. ये इतिहास है. और मिस्टर अंकुर, व्हाट शुड आई डू नाउ? तमिलनाडु NCERT book. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई एम नॉट फैमिलियर विद द तमिलनाडु NCERT बुक. अच्छा माय स्टूडेंट्स, प्लीज, आई एम अ बिट क्यूरियस. एनी ऑफ यू फ्रॉम तमिलनाडु particularly, please inform me. If some of you are from Tamil Nadu, please inform me fastly. I am a bit curious, so that I will take the special care for that. I'm waiting for your response, my friends. कुछ है. My students, actually, in order to satisfy my Hindi students, I'm using certain sentences of Hindi as well, because some students are from the Hindi background and they find difficulty if I'm delivering the whole lecture in English. So please, my students, make me clear that whenever I started to use Hindi, so those students from English medium, do you find any difficulty, or are you uncomfortable at that time? Or that will do. Suppose you can say I'm using maximum English, but certain sentences of Hindi as well. So that is not going to hamper you. I think hamper your interest and you people will feel comfortable. So please inform me so that I have to follow the policy accordingly. Okay, right. Thank you, my friends. Today I'm staying here. Tomorrow homework for you. Ancient world and medieval world. You go through my study material. तुम चाहे कुछ भी पढ़ लो, अंत में तुम्हारा काम मेरे स्टडी मटेरियल से होना है. इस बात को ध्यान करना. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ था, वही बात होने जा रही है यहाँ. वर्ल्ड हिस्ट्री में आई प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल इन एडवांस एंड यू पीपल हैव टू फॉलो इट. और सबसे अधिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मेरी स्टडी मटेरियल से बनेगी, क्योंकि उस वैसा ही जैसा मैं क्लास लूंगा वैसा ही इंटीग्रेटेड मैं स्टडी मटेरियल दूंगा. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू. NCERT और आपके नोट्स. Sufficient. In world history, my notes will be sufficient. My study material will be sufficient.